So there is a very important triangle which is the following. Suppose you have a triangle like this. This angle is 90 and this is theta. This length is L. So what is this length? What is this length? ये length क्या हो जाएगा? Base in terms of L and theta. Yeah. So let us take it to be x. So what is cos theta? X upon L. So what is x? L cos theta. Similarly, if you look at y, this y, the opposite. So sin theta कितना हो जाएगा आपका? Yeah, sin theta is y upon L. So y is L sin theta. So अगर आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, दिस लेंथ इज L, दिस एंगल इज थीटा, तो जो एडजेसेंट होता है ना उसकी वैल्यू होती है L cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज गिवन बाय L sin थीटा. Okay, this is the idea. Now if you look at another triangle here, suppose this is alpha. So can you tell me what this length is? What this length is? L cos alpha, adjacent, and this one L sin alpha. We had seen this in the context of vector addition. जब हम vector addition कर रहे थे, so उसको एक बार quickly आपके लिए थोड़ा सा recap कर लिया. Very important fact. ये हम actually already देख चुके हैं. Next part पे चलते हैं. सो नाउ व्हाट्स गोना हैपन, हम लोग ना एक वेक्टर को ना उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दैट मींस. सो लेट अस से आई हैव अ वेक्टर, यहां पे मेरे पास एक वेक्टर है. सो व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए? दिस इज 5 यूनिट्स, 10. सो इस वेक्टर का x कंपोनेंट है 10. दिस इज 10 यूनिट्स अलोंग x एक्सिस. एंड इफ आई आस्क यू इसका y कंपोनेंट क्या है? 0, नो y कंपोनेंट. If I draw another vector like this, what is the x component? 10. What is the y component? 5 units. Okay, yeah. So this is something that you have understood pretty clear. If I have a vector like this, x component, y component, no. Yeah, exactly. Just because you keep a vector here doesn't mean the component of that vector changes. Component remains the same. देखो वेक्टर को ना, if I displace this vector, the vector doesn't change, the components do not change. The meaning of component is it's a kind of a projection or a shadow. If you shine light from here, what will be the width of that light on x axis? एंड y कंपोनेंट का मतलब है y एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन होगा उसका. दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन. इज दिस क्लियर? जस्ट बिकॉज आई मूव अ वेक्टर डजंट मीन द कंपोनेंट्स आर गोना चेंज. नाउ इफ आई हैव अ वेक्टर लाइक दिस, what is the x component of this vector? Okay, the x component of this vector is minus 10 because it is pointing to the left. Y component, y component क्या? 5. Okay, yeah. What about this vector? X component? X component is minus 10, y component is minus 5. And what about this vector? X component 10, y component minus 5. ठीक है, एक वेक्टर को हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे रख के देख लेते हैं. या कैन यू से इस वेक्टर का x component क्या है एंड y component? y component क्या है? नहीं, अच्छे से -10. इसको उठा के यहाँ देखो ना मेंटली, अब दिख रहा है x component क्या है? -5 and y component is -10. This is the basic idea. So एक last question कर लेते हम लोग. What about this vector? X component is -10, y component
y component क्या है? -15, 10, 5, 5, 5, -15. ठीक है, समझ में आ रहा है? yeah. So these are the components of the vector A. Clear? Yeah. Ab now we can also write these components in another form. So this is the basic idea. So let us say I have a vector here A. This is my vector. The angle this vector makes with the x-axis is theta. So this is the x component of A. This is the y component of A. So do you see a right triangle here? So what is AX in terms of A and theta? A is the length of this vector. So ये जो आप triangle देख रहे हो इसका length होगा A and this is AX. So what is AX in terms of A and theta? A cos theta. Perfect. So AX is A cos theta. Similarly, what is AY? A sin theta. AY is A sin theta. So now if I want to write down this vector A, this vector A can be written as A vector AX plus vector AY. Okay, so vector AX plus vector AY. Now let us also ask a separate question. देखो basic आपको idea बता देता हूँ. What is the meaning of this components and resolution of vector? Suppose I want to describe this particular vector. I can describe it in two ways. I can say this vector has a length of 15.8 and it is pointing इसका जो angle है x axis के साथ that is roughly 18.4 degree. This is one way of describing this vector by its magnitude and its angle. Another way of describing this vector, can you describe this vector in another way in terms of its component? This is a vector whose x component is and y component is 5. This is another way of describing this vector. So if you just tell me the components, right, I can draw a vector. Like कोई भी component बोलो आप, you choose a component. Ax बोलो कुछ reasonable 5 के multiple में, ठीक है 15. Y component 10. Yeah. So now I can easily draw the vector and you can just visualize it also. ये 15 हो गया, ये 10. This is our vector. This is another way of specifying the vector. Okay. समझ में? So I will say ये vector जो है ये x axis पे इसका component 15 है, y axis पे 10 है. But we want to write it in a mathematical way, mathematical notation. देखो. Now we use something called as a unit vector. अगर आपको unit vector पता है, what is a unit vector? Whose length is 1. Yeah. So जैसे ना ये एक यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ ना 1 है. इस वेक्टर को हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड I cap. This is a special vector called I cap. This is a unit vector along x axis. So how do you think 5 I cap will look like? This would be 5 I cap. How would 10 J cap look like? This will be your 10 I cap. This will be 10 I cap. So yeah, just by multiplying I cap by a number, you can increase the length. So this will be a vector along x axis. Similarly, how would minus 5 I cap look like? This is I cap. Minus 5 I cap would be like, it would look like this. Okay. Similarly, we have J cap. J cap क्या होता है? The unit vector along y axis. Yeah. So this vector will be J cap. This particular vector जो आप देख रहे हो, J cap. So similarly, what I can do, 5 J cap क्या हो जाएगा? ये. Yeah. So now let us say I want to describe a vector like this. 10 I cap plus 5 J cap. How will it look like? Plus 5 J cap. So this is 10 I cap and this is 5 J cap. So your resultant vector is this, and this vector is 10 I cap plus 5 J cap. This is another way of writing a vector. Now we have written this in mathematical form. See, instead of saying the x component of this vector is 10, y component is 5, we say this vector is 10 I cap plus 5 J cap. This is how we specify a vector now. Is this clear? Yeah.
अगर आप इसको if we look at it in the form of notations, this is how it is. Yeah. So what happens once you find out ax and ay, now you can write down your general vector like this. Vector a is ax I cap plus ay j cap. Does this statement make sense now? That's exactly what I did previously. किसी भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप. What do we call ax as? What is ax? The x component of a, the x projection of a, and ay is the y component of a or y projection of vector a, and we generally write a vector in terms of its x and y components. Is this clear? Now if I want to write it everything in terms of theta, this is how I will write. What is x? Ax, a cos theta. What is ay? A sin theta. So I can generally write a vector like this: a cos theta I plus a sin theta j. Yeah. Now what is a in terms of ax and ay? See, ax का मतलब क्या है? The base, ay is the height. So a is basically under root ax square plus ay square. This is vector a in terms of ax and ay. And what is angle theta? Tan theta. ये ay है, ये ax है. So tan theta is ay upon ax. Understood? समझ में? This is the idea. इसको मैं ना समराइज कर देता हूँ क्विकली. देखो क्या होता है, वेक्टर को ना स्टडी करने के दो व्यूज होते हैं, दो लैंग्वेज होती हैं स्पेशली. वन इज द ज्योमेट्रिक लैंग्वेज जो हमने सबसे पहले पढ़ा. नेक्स्ट इज द एल्जेब्रिक लैंग्वेज, एल्जेब्रिक वे ऑफ स्टडीइंग वेक्टर्स. ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में आप क्या स्पेसिफाई करते हो? वेक्टर का लेंथ और थीटा. आप बताते हो वेक्टर का लेंथ क्या है, थीटा कितना है, विच वी डिड टिल नाउ. नाउ एल्जेब्रिक वे में आप क्या करते हो? वेक्टर के ना कंपोनेंट्स बताते हो, उसके ना एक्स और वाई कंपोनेंट्स कितने हैं इस वेक्टर के. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज वन वे ऑफ स्पेसिफाइंग वेक्टर कि ना उसका एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, या उसका लेंथ इतना है और थीटा इतना है. नाउ वी वांट अ रिलेशन बिटवीन दीज टू लैंग्वेजेस, द ज्योमेट्रिक व्यू एंड एल्जेब्रिक व्यू. तो रिलेशन क्या है? रिलेशन मतलब हाउ डू यू राइट ए एक्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा. व्हाट इज द रिलेशन? ax in terms of a and theta क्या है? ax is a cos theta. And what is ay? A sin theta. So what this is? This is ax and ay in terms of a and theta, the algebraic view in terms of geometric language. Next would be, how do, अगर मेरे को ax ay पता है, how do I get a? How is a related to ax and ay? A is अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. इसका मतलब अगर आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है, एल्जेब्रिक कंपोनेंट्स पता है, आप उसका लेंथ निकाल सकते हो. एंड फाइनली अगर मुझे ए एक्स ए वाई पता है, मैं थीटा कैसे निकालू? ऐसे, tan theta is ay by ax. And finally we will say or theta is tan inverse of ay upon ax. So this first function is the components in terms of a and theta, and next is the a and theta in terms of components. Understood? पहला स्टेटमेंट क्या है? ये दिया हुआ है और ये निकालना है. नेक्स्ट में ये दिया हुआ है और ये निकालना है. दिस इज द आइडिया.